COVID was a very tough time for all of us, and I don't think I've met one person जिसने बोला कि COVID में हमारा कोई नहीं गया हो. Everyone has lost someone. और इतना सैड पीरियड था वो कि मैं अपने रूम से नीचे आता था मम्मा से मिलने, then मम्मा बताती थी आज वो वाले चाचा जी चले गए, कल ये वाले मामा जी चले गए, and every day there was someone we were losing. It was such a depressing time, but I think the तब इंडिया में my थे? lowest point, no, I was in New York. New York. Yeah. And I think the lowest point was when I lost my grandfather, Nanu, my mother's dad, and I was very close to him. अच्छा. He was like a third parent. मम्मी पापा तो ट्रैवल करते रहते थे, बट हमें नाना नानी के पास छोड़ जाते थे. सो हमारा बहुत ही देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट आई हैड विद नानू. दिल की सारी बातें. सब या Cool के, everything yeah he was like a best friend. And grandparents होते भी usually होते ही. cool है. They when once you skip a generation, then Yeah, you're like, yeah, okay, yeah. don't repeat my mistakes. So they're very cool. You can talk to them about everything. So when I lost him, I was completely utterly broken because he was such a driving force in my life, and I used to FaceTime him every day, talk to him every day. तो उसके बाद I was going through depression and anxiety, and I took a break from playing also. बिल्कुल करने का छोड़ मन नहीं, दिया. बिल्कुल मन ही नहीं करता था कुछ करने का. रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता था. रूम में ही खाओ, रूम में ही, बाहर ही मत निकलो कुछ नहीं. वेदर भी अजीब सा हो रहा था उस टाइम. So, but एक point के बाद I was like, this is not the way to live. I need to do something about it. I spoke to my friends also कि यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ करने का ही नहीं मन करता. It's how do I get out of this void, this hole? और दोस्त हर वक्त एक अच्छा सर्कल था. Yes. I'm very blessed to have a very good supportive circle. ये बचपन के ही दोस्त थे या वहाँ के दोस्त थे? Actually, there were a lot of online friends that I made during COVID on Clubhouse. हाँ, क्लब हाउस तो उस टाइम पे Clubhouse was booming. Yeah, it was booming. तो उस पे कुछ दोस्त हैं, मैं अपने पुराने दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से, सबसे बात कर रहा था. मिल तो किसी के साथ नहीं सकते थे, सबसे फोन पे ही बात होती थी. तो उन लोगों ने बोला कि they also said look out for yourself, try therapy. क्योंकि हमने मूवीज वगैरह में देखा है, but we've never, it's such an intimidating experience, That's to true. like be It's not vulnerable in for front of someone. So I tried it and it really worked for me. I पहले तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी उस टाइम. आप कॉल